Hello students, I am Ankit Kush. Welcome back. So today we will prepare for the this revision assessment, right? So let's see Unit 1 Introduction to IT and ITES industry. So how you will prepare for the exam, for any exam. So first of all, read the chapter carefully and try to find out the keywords or the terminologies which is necessary to understand, right? Like what is ICT? What is ICT, Information and Communication Technology? What is exactly ICT? What is IT? What is IT, right? Information Technology. What is ITES? Information Technology Enabled Services. You must know the difference between these three. Getting? And next, the other part is information technology क्या होता है? What is information technology? Information technology means creating, managing, and storing and exchanging information. Getting? IT means what? IT from here you can say creating, managing, storing and exchanging information. बस इतना ही है information technology. Getting? और information technology enabled services क्या होती हैं? जो भी services are applied to any organization, provided to any organization, that is the information technology enabled services, right? बीपीओ क्या होता है? बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. पॉइंट टू पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर द टर्मिनोलॉजीज, राइट? कोई भी बिजनेस परफॉर्म करते हैं, इफ यू आर परफॉर्मिंग एनी बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर, आपको कोई काम करवाना है बाहर की किसी सर्विस प्रोवाइडर से काम करवा सकते हैं. गेटिंग? बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स यू हैव सी. गेटिंग? ओके. अगर हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करते हैं, दैट इज द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. गेटिंग? जैसे कि अगर बीपीओ सर्विसेज कुछ देखें, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है, दिस ऑल सर्विसेज आर व्हाट? आउटसोर्स्ड. किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है कि आप हमारा फाइनेंस हैंडल करो, आप हमारा टैक्सेशन हैंडल करो, है ना, लाइक लीगल सर्विसेज हैंडल करो आप मेरा. सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर, डिफरेंट organizations are there which are what supposed to which we can outsource the this work, right? Understood? Now next, BPM industry in India. BPM, business process management industry, has been fueling India's growth in addition to contributing towards the India's GDP. आपने सुना होगा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये सब कैसे फ्यूलिंग इंडिया के पास इतना पैसे कैसे आ रहे हैं? हाउ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज गोइंग ऑन इन इंडिया. गेटिंग? ऑल दिस आर व्हाट you have to you know the growth of IT BPM industry has provided India with a wide range of economic and social benefits, which includes creating employment भी जनरेट होता है, इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोट होता है. गेटिंग? सो ऑल दिस आर व्हाट BPM इंडस्ट्री इन इंडिया. ठीक है ना? दिस सेक्टर अट्रैक्ट्स अमंगस्ट द लार्ज इन्वेस्टमेंट बाय द वेंचर्स. बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट क्या होता है? बिजनेस को ऐसा हैंडल करना, यू हैव टू हैंडल द बिजनेस सच अ वे सो दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी देयर इन इंडिया in some particular business, right? Or it is fueling. Why we are calling it fueling India? Because it is creating employment, raising income levels, promoting exports, right? What is exactly the structure of the IT BPM industry? Sectors the organization is serving. Service, I think you understand what is service industry, right? ये होटल हॉस्पिटैलिटी वगैरह, व्हाट ऑल दिस कम्स अंडर द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री, राइट? मल्टीनेशनल कंपनीज जिनकी कई जगह दुनिया में ब्रांचेस होती हैं, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स जिनकी ऑपरेशंस इंडिया में होती हैं. गेटिंग? जिनका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? इंटरनेशनल लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लोकेशंस पे. गेटिंग? ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स हैं टू कैटर टू द नीड्स ऑफ देयर पेरेंट्स कंपनीज.
गेटिंग ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, व्हाट इज ग्लोबल इन हाउस सेंटर? जिनका एक ब्रांच होता है और उनका हेड ऑफिस कहीं और होता है। मतलब उनकी एक ये सब कंपनी होती है, एक उनकी पेरेंट कंपनी होती है जो उनको डूबने नहीं देती। गेटिंग राइट। And this is the most important topic, IT applications. IT applications, this is the most important topic, right? What is the application of IT? हॉस्पिटल्स में, मेडिकल इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है, घर पे कैसे यूज़ होता है, हेल्थ केयर, एनिमेशन की फील्ड में, रिसर्च एंड एग्रीकल्चर के, मिलिट्री में कैसे यूज़ होता है आईटी। दिस थिंग्स यू शुड, द आंसर ऑफ ऑल दिस शुड स्ट्राइक ऑन योर माइंड, राइट? यू विल बी एबल टू आंसर। आईटी इन होम कंपटीशन, in home, why we use to play games, to surf the web, all these are the uses of IT in the home, right? Email, music, listening of music, IT in everyday life, where we use IT in our daily life, where we use IT in our daily life, in whatever softwares we are, whatever products we are using, the software embedded on it, like washing machines and other devices, microwaves, under which software is embedded. So what is software? We are embedding software means what? We are using IT in these devices, implementing IT. Understood? And how IT is used in library, use of IT in the library. Tell me, what is the use of IT in the library? Nowadays we can handle all the e-library. I think you have understood the concept of e-library. Yes, all the books are stored with the help of the computers. Means we can read the barcode. One barcode is there in the book. You paste it on the book so that it will be easy to find out the books and to issue the books, right? We can easily handle using the computer. So this is IT in library. Next, IT at workplace. आपने तो देखा होगा, most in every organization we are no using computers. Why we are exactly is using the computers to handle the data, right? Large number of files will be there otherwise. आपने देखा होगा पुराने ज़माने में नंबर ऑफ फाइल्स, अभी भी पुराने रिकॉर्ड्स जो हैं वो फाइल्स के फॉर्म में, देयर आर सम रूम्स इन विच ऑल द फाइल्स आर स्टोर्ड, राइट? हार्ड copies of every document is stored. But now every documents, every files and everything is stored inside a computer, in a soft format. Getting? So इस चैप्टर में IT application is the most important. जो स्टार्टिंग में आपको दो ही तीन चीज़ें पढ़ना है, ITES, what is ICT, and after this basic definitions, differentiating this basic definitions, the other things what you have to study is the application of IT in the various sectors, right? Now IT in education, ये तो आपको पता ही है, smart classes is the smart class is the result of IT. We can show audio visual classes, audios videos with pictures, animations. Getting? Online assessment is also possible. Online exams you have seen, right? And optical mark reader is there to check OMR sheets, right? All these are what this application of IT in the education sector, right? Now ICT in the classroom, this is the sub part of it, है ना? I already told you in the classroom, for it is used as a e-learning classroom, audio visual classroom, to show videos, animations, right? Education anywhere, anytime. NCRT has also websites. Through websites also you can learn. Mobile app also you can learn. NCRT has launched www.epathsala.nic.in for the whatever you want to access the books of NCRT. Web based training, you can train, the teacher can train anybody using the websites here, right? Through YouTube also. YouTube is also a kind of website in which videos can be placed, right? Videos can be uploaded. Teaching aids and media, what all teaching, what all things we teacher uses related to IT while teaching. Audiovisual classes, audio pictures, animations to explain you the things in a better way. Learning management system, learn lessons anytime, anywhere, is being used by many countries to manage the school systems. Learning management system,
Everything is learning management system. A student or teacher can register on the official websites. Uh, Suppose any website is there and the teacher and the students are linked, you can access it anywhere, anytime. So that teacher can upload the lectures on that website, and the student can access or see that lecture anytime, anywhere, right? Because it is connected to internet. So this is what learning management system. According to our time, we can manage. Uh, Participate in co-curricular activities, monitor the progress of their children. Yes, the results can be uploaded online, right? IT in entertainment, chatting means social networking websites are there, multimedia's movies, you can watch movies, you can download movies, songs, right? You can play games, you can see multimedia videos, television you can watch, right? All these are what? IT in the field of entertainment. IT in communication, you can do email, you can do chatting, you can do video conferencing, audio conferencing. All these are what? These are all IT in communication. IT in business में तो I think everything is striking on, you can even frame the answer of your own. IT in business में कैसे यूज होगा? Yes, all the records and data are maintained. आपने देखा होगा, आप किसी शॉप पे जाते हैं तो एवरीथिंग यूजिंग द बारकोड रीडर, वो आपको सामान को बारकोड रीडर रीड कर करके सामान को आपको सेल करता है। तो उससे व्हाट हैपेंस कि आपको वो बिल जनरेट करने में आसानी होती है फॉर द शॉपकीपर, और वो कितने प्रोडक्ट्स खत्म होते जा रहे हैं, किसका स्टॉक है किसका स्टॉक नहीं, ऑल दिस आर व्हाट मेंटेन्ड। सो ऑल दिस आर व्हाट आईटी इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। आप अपने से लिख सकते हैं, गेटिंग आईटी, यूजिंग द आईटी यू कैन यू कैन मेक गुड एडवर्टाइजमेंट्स आप बना सकते हैं, गुड पोस्टर्स बना सकते हैं जिसको होर्डिंग्स में लगा सकें, गुड एडवर्टाइजमेंट्स। टेलीविजन के लिए एडवर्टाइज बना सकते हैं जो हम किसी भी मीडिया ग्रुप को दे सकते हैं, या कोई भी अच्छे एनी काइंड ऑफ वो एडवर्टाइजमेंट वी कैन ड्रॉ यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर्स लाइक कोरल ड्रॉ, सो दैट पैम्पलेट बना सकते हैं। सो दिस इज आईटी इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, राइट? आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, वेट, आईटी इन बिजनेस, आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस एंड इंजीनियरिंग में तो आपको पता है सुपर कंप्यूटर्स आर देयर, so that we can research on some different kind of things. And second is scientific calculations can be done, complex scientific calculations using these systems. CAD, what is CAD? CAD is a kind of software, computer aided design, using which you can draw the 3D image of if you are um, trying to invent any new car, or you want to show anybody the 3D image, the exact look of the car from the inside, then you can show the 3D image of that, right? Civil engineers can also use it to show their client the 3D image of the house they are going to create, make, build, right? Getting computer aided manufacturing, all these are what? All these are used for drawing, designing, and for simulation purpose, right? So, and that's IT in banking. You already know internet banking. You can send money online using the internet banking. Everything is possible, right? ATM is there for cash withdrawal or deposit. You can check your how much money is there in an account through net banking or through ATM also. So all these are the facilities in the field of banking. IT in banking, right? IT in insurance companies. They also store records and update the records and update their clients also about the starting date and the maturity date, right? IT in marketing, how IT is used in the field of in the field of marketing. I told you they can create advertisements, right? And using the televisions, they are broadcasting all over the India, right? Through the internet. Also they are broadcasting, yeah, they are showing, they are advertising, right? They can create websites, right? So all these are the facilities in the field of IT, so in the field of marketing using the IT, right? IT in healthcare, lot of machines are there in the health sector, like ECG machines, MRI machines, right? So through MRI machines, what you can do, you can take the
digital images, right? You can take the digital images of the internal organs of the body using the magnetic field and radio waves, right? uh, so this is the MRI, which was not possible earlier, right? Nowadays such kind of machines are available. Computerized axial tomography machine, ठीक है ना? Using this machine, three-dimensional image of different parts of the body can be made, right? So this all are what possible with the help of IT. Electrocardiogram machine, which is used to monitor the heartbeat. Getting cardiac screening machine. This machine displays the psychology of the physiology of the heart, right? ECG, this is also very famous, right? ECG is what? It is used to record the activities of the brain. Sugar testing machine, blood pressure measuring testing machine. What? All these are the IT in use of IT in different fields, and this is very important, right? These all fields are, yeah. What you have to remember this. You have to remember the name of this. Remember, you have to remember the full form of these machines also, right? You have to remember the full form of the ECG. What is the full form of ECG? What is the full form of MRI, right? And after that, you should remember the points only, and the content you have will automatically keep on your will stay in your mind, right? You have to just remember the points कि ये मशीन होता है, ये मशीन होता है, और थोड़ा सा उस मशीन का मेन पॉइंट कि व्हाट इट फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड फॉर, राइट? एंड आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज और गवर्नमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं आईटी को? IT in the government and public services, we know that whatever information related to government, we can easily see it on television or in advertise, or whatever information we want to access related to different departments, we can access is using their websites, right? Suppose there are different kinds of websites in which we can even create account for job also. We can create account on different employment departments of the government. So what are all this? These all departments have their websites, and in their websites all the details are available, and even we can feed our information, our details, to access to have the facilities of that department. Yes, like food department, electricity, we can even pay the electricity bills, right? We can take the we can help the um, you can take the online services, right? We have a lot of online facilities available from the government side. We have to just go to their websites, and we can take advantage of that, right? Getting. So all these are what? All these are the what? E-governance, right? E-governance. So practical exercise, this you can see, this you can implement or not, right? Explore the impact of IT in various fields in day-to-day life. So this is the way how to study. You have to read the chapter carefully and see what all things are there. You have to make point to point note, right? Point to point note. मतलब ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर बहुत लंबा है, अगर आप ऐसे उसको बार बार रीड करेंगे दैट इज गुड, बट अगर एक बार उसका शॉर्ट नोट बना लें देन इट विल बिकम शॉर्ट नोट इन द सेंस पॉइंट टू पॉइंट नोट. ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही लिख दिया उसमें, पॉइंट टू पॉइंट नोट. आईटी, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ आईटी, राइट? एप्लीकेशन ऑफ आईटी, जैसे कि आईटी हो गया बैंकिंग में, तो आईटी इन बैंकिंग, इसका आपने नोट बना दिया, बैंकिंग में आईटी का क्या यूटिलाइजेशन है, तो आपने आईटी इन बैंकिंग लिख दिया, राइट? उसके बाद आपने लिख दिया कि ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग लिख दिया. इसके आगे आप जब नोट्स बनाएंगे आईटी इन बैंकिंग के सामने इंटरनेट बैंकिंग लिख दिया, राइट? और उसके बाद क्या लिख दिया? एटीएम लिख दिया, राइट? एटीएम लिख दिया, इंटरनेट बैंकिंग लिख दिया, एटीएम लिख दिया. सो व्हाट ऑल थिंग्स आर आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही होता है ना. आरडी, एफडी, ईआरडी, ईएफडी, ई मीन्स व्हाट? इंटरनेट, राइट? एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, दिस ऑल आर डन थ्रू दी आईटी इन बैंकिंग. ठीक है ना? तो एग्जैक्टली इट इज अ व्हाट? इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग के अंदर ई आर डी, ई एफ डी, आर टी जी एस, एन ई एफ टी, ऑल दिस कम्स अंडर मार्क.
सो ऑल दिस आर व्हाट, ये पॉइंट टू पॉइंट आप इसके सामने 5-6 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, लाइक इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, ईआरडी, आरटीजीएस, एनईएफटी, लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज द वे, आपको इतना दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट 5 पॉइंट्स लिख दीजिए कहाँ कहाँ यूज होता है इन बैंकिंग, और उसी को एग्जाम के टाइम यू हैव टू रिवाइज इट, राइट। तो एक आइडिया रहता है दिमाग में, गेटिंग। और हेल्थ केयर में बार बार आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब मशीन्स का आपने एक बार मेंशन कर दिया, यू हैव मेंशनड, एक ये कैट लिख दिया, कैट का फुल फॉर्म लिख दिया, आईटी इन हेल्थ केयर, ये मशीन्स, एमआरआई जैसे लिख दिया, एमआरआई का फुल फॉर्म लिख दिया, और आपने बस इतना लिख दिया, यूज्ड टू गिव डिजिटल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, बस इतना ही लिखना है, देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस आंसर्स। ऐसे ही सब, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, गेटिंग। So I think that this is enough for the preparation. In this way you have to prepare for the exam. Not only this, for this revision assessment, for any exam you have to prepare like this only, right? And after the reading in such or creating in such a notes, you will be able to attempt all the question and answers, right? So that's it. Thank you. Have a nice day.